In case of painting, we decide what to paint. In case of writing, we decide what to write. और दूसरा एस्पेक्ट होता है हाउ टू राइट एंड हाउ टू पेंट. तो इस दोनों को अगर हम सोचें तो पहला एस्पेक्ट जो है ये आपकी तैयारी के ऊपर है. आप एक अर्बन हैं, आप दिल्ली में पढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं, आपके सामने कंक्रीट के ये जो फ्लाईओवर्स हैं ये बने हैं, और मान लीजिए एक दूसरी लड़की है जो कि आदमगढ़ की है, उसके सामने ये नहीं बना है, तो जाहिर है आपकी समझदारी जो है, जो वह आपके विचार जो हैं, आपके जो आइडियाज़ जो दिमाग में आते हैं वो उससे भिन्न होंगे. नमस्कार, मैं अमित कल्ला, विजुअल आर्टिस्ट और पोएट. आज हम लोग इस कैंपस के अंदर हैं, IIIT दिल्ली, जो कि तकनीकी का एक केंद्र है और तकनीकी भी कला का एक अहम हिस्सा है. आइए कुछ कलाकारों के इतर जो नए कलाकार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, आइए आपको उन तक मैं लिए चलता हूँ. What's your name? Aditri. Aditri. Yes. Aditri, आप क्या क्रिएट कर रही हैं इस समय? Basically, these are flowers. This is a seaside painting, and यहाँ पे पानी start हो रहा है, so I've thought of making something underwater उसके नीचे, and basically this everything is in a girl imagining everything, a beautiful world with. क्या एक्सपीरियंस अदिति आपको इन 2 दिनों में अभी होता है? पेंटिंग मैं बचपन से करती हूँ एंड कैनवस में मैं काफ़ी न्यू हूँ. लाइक मैंने प्रीवियसली 1-2 बार ही किया है, बट आई रियली लाइक इट. आपको मैं लिए चलता हूँ एक दूसरे चित्र की तरफ. मुझे तो देखने में ये एक ह्यूमन फिगर, एक फीमेल फिगर कहीं ना कहीं दिखता है. एक आकृति उभरती हुई नज़र आती है जिसमें कुछ सरलिज्म है, जिसमें कुछ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के हम कहें कि रूपक यहाँ पर हैं. आपका क्या नाम है? पूजा. पूजा क्या सोच के आप इसको बना रही हैं, या क्या थॉट्स हैं आपके? I'm trying to portray a state of confusion and brainstorming, and it's not always a bad place to be, and there's beauty in it also. So that's ग्रेट पूजा. कन्फ्यूजन में भी एक ब्यूटी है ना? एक उलझाव में भी कुछ सुलझाव हैं. गांठें जब खुलती हैं तो फिर यहाँ पर फूल खिलते हैं. तो आप अपने इमेजिनेशन को, अपने क्रिएटिविटी को कलर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रही हैं. yes, exactly. हेलो, हाय, हाउ आर यू? I'm fine. व्हाट्स योर नेम? Nayan Dwivedi. नयन. Yes. नयन, आपके नयन क्या खोज रहे हैं नयन? मैं इम्प्रेशनिज्म ही ट्राई कर रहा हूँ. मैं बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल ऐसे जिससे देख के आंखों को खुशियाँ मिले. हाँ, अच्छा. तो डेफिनेटली आपको कहीं इसमें मोनेट, पिसारो, yes. है ना, मोने और भी inspiration मैंने है. और हाँ. ये सब नज़र आ रहे हैं. हाँ. हैं, सिसली, ये सभी इसमें उतरते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये वाटर लिली, मोनेट की वाटर लिलीज, तो उन वाटर लिलीज को आप अपने तरीके से पेंट कर रहे हैं. वेरी नाइस. व्हाट्स योर नेम? I'm Biswa Smita. So what you are going to depict on this canvas? I have just started drawing whatever I like. Okay. And whatever is in my mind, and which is showing my situation right now. So Okay. I don't know how it will end, but it's just a process. So I'm just trying to enjoy the process. This is wonderful. You are trying to showing your situation. Yeah. तो The situation or like surrounding whatever is in my mind.
अगले फ्रेम में आप एक पोर्ट्रेट को बनता हुआ देख पाएंगे। एक पोर्ट्रेट है अनस सुल्तान, जो मेरठ से आए हैं, एक बहुत ही परिपक्व आर्टिस्ट हैं, एक मैच्योर आर्टिस्ट हैं। वो एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं। जिनका पोर्ट्रेट बन रहा है वो हमारे सामने बैठी हैं। बहुत मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. आई फाउंड दिस वेरी थेरेप्यूटिक बिकॉज वी ऑल हैव असाइनमेंट्स पेंडिंग फॉर and in spite of that we are all here. That must mean we are part of something bigger, and me and my friends, we were planning on attending this since a while because all of us really enjoy art and we don't get the time to take part in it anymore, and this was very fun to do, and I'd love to be a part of another workshop like this again. Okay, so it was really great interacting with the artists. Yeah. I personally interacted with Amit Dutt and it was really inspirational for me. He also invited me to his studio in Narela. So yeah, feeling grateful. The artist gave me some really great advice and I incorporated and I learned a lot. I loved seeing all the different art styles. That was a major point for me because everybody has a completely different way of looking at things, of going about with their art. I saw this same workshop last year ago too, and people have really improved. And I think it has gotten much better because people are excited to have this workshop, and I'm looking forward to participating in it. The best experience was obviously drawing my own canvas because I did whatever came to my mind, and the fact is they gave very much freedom. So you can draw anything. There is no competition. There is no first, second, third. You can learn from anyone. You can talk to them and like interact with them and improve your skills. Like what I saw, how the techniques and all the workshops, that really helped. Yeah. I liked it a lot because usually we don't get the time to like paint and stuff. Throughout the year, we're like focusing on our academics and that kind of stuff. So like having the opportunity to paint after such a long time, like the last time I painted was actually the same session last year. So it's kind of good coming back to this. I feel good to have practiced painting after a long time. I found out that I was slightly better than before.